Hi, my name is Anjali Mishra. I am going to teach breathing and exchange of gases from 11th standard of NCERT. I hope you will like this video. So, the breathing and exchange of gases. Now, exchange of gases. What kind of gases we are exchanging? So, primarily we have oxygen and carbon dioxide. Oxygen and carbon dioxide in our environment, which is required for giving life. So oxygen is giving life to us, and the carbon dioxide is used for fixing the food in plants. So both are very crucial in the environment. One is giving life to human beings and the other is giving life to plants. Without plants there will be no life. So plant is also important, and for plants we have carbon dioxide. For animals we have oxygens. Now these two gases are very important. Other gases are also prevailing in the environment, that is nitrogen 78%, and it is meant only for reducing the friction when the meteorite is coming down. Like बाहर के स्पेस से अगर मेटेराइट आ रहा है तो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट करके उसको जला के खत्म करने का काम नाइट्रोजन का होता है. बट एज सच उसका ह्यूमन फिजियोलॉजी से या प्लांट फिजियोलॉजी से ये रिलेशन नहीं होता है कि वो किसी को लाइफ दे. हाँ, एज अ फूड यूज होता है नाइट्रोजन बैक्टीरिया, वो अलग पार्ट है. बट ये यहाँ पे हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में, दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बॉडी या फिर इन अदर एनिमल्स, वी विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड वी आर एक्सहेलिंग and the oxygen which we are inhaling, and this exhaling and inhaling process is known as breathing. So breathing is a part of respiration. The whole process of respiration is very different. We have many steps in respiration. The first step is breathing. Breathing is totally a physical process where, because of some gases and the solubility, we are inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. So breathing is just inspiration and expiration. Inspiration of what? Inspiration of oxygen and expiration of the bahar nikalna, that is carbon dioxide. So this is the chapter's name suggests, that is breathing and exchange of gases. Now this is breathing is a small topic, a small step in respiration. So what is respiration? Respiration is totally different. Like, what is respiration? This is the physiological process. What is respiration? Like in our human physiology, we have studied many physiology, like started with digestion, then respiration, then circulation, then muscles, and then control and coordination, and the endocrine glands. So what happens here? Whatever the food we are eating, that is acting as a source of food. Like when you, by digestion, you are, what you are doing, we are taking carbs, and this carbs is a complex food which we are converting it into glucose. This is the simple food: glucose, amino acid, fatty acid. These are simple foods. So we are just breaking the complex food into the simple. That process, that physiology is known as digestion. So digestion is not giving the energy. Digestion is not giving the energy. It is just giving the source of energy. So like कोयला अगर होता है तो उस कोयला is the source of energy. When we are lighting up, then we are getting the energy. So glucose is like the source of energy. When we are breaking it, then you will get the energy. And energy is very crucial for life. अगर energy नहीं है तो life is impossible. So we all the physiology is working to get the energy. Like I am talking, I need energy to talk. I need energy to teach. I need energy to do my work. So we all are doing our work because of energy. If there is no energy, we are like the dead. So we need first source of energy. So source of energy we are getting from digestion, that is glucose, amino acid, fatty acids. And ग्लूकोज ही ज़्यादा पड़ता है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी मिलता है. Then what is the role of oxygen? The oxygen which we are inhaling, the oxygen which we are inhaling, they are what doing? They are doing just oxidation of food. They are just burning the glucose and giving you the energy. So this oxygen is acting on the glucose. This process is known as oxidation of food. Oxidation of food. And with the help of this, when the oxygen is acting on the glucose,
then this glucose is converted into or broken down into ATP. So you are approximately you are getting 36 amount of ATP, 36 to 38 amount of ATP. So this is the process of respiration. Breathing helps in just getting the oxygen inside your body, inside your lungs, and respiration is the whole process where we are getting the energy. The only importance of all these physiology is to get energy. So respiration is very important. So respiration is very important. So what is the definition for respiration? Respiration का definition क्या होगा? Respiration means the breakdown of the complex food material. Now here the complex food material is glucose. The breakdown of the glucose or the complex food material into the simple form to get what? Energy. The complex substance is broken down to simple substance to get energy. The definition is same like the digestion, but there we are not getting energy, here we are getting energy. The purpose of respiration is to get energy. So that is the whole process of oxygen. So if you are inhaling more, you will be more active. Active why? Because your body is having full of oxygen. Your mind will have full of. इसलिए बोलते हैं कि सुबह सुबह वॉकिंग करना या नेचर में रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, so that your mind will be awakened. So this is respiration, and in that respiration you have many steps. To get this energy, you have to go through many steps. The first primary step is breathing. ब्रीदिंग नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एनर्जी तो कभी नहीं मिल सकती. तो इसलिए रेस्पिरेशन का पहला प्रोसेस होता है कि ऑक्सीजन लेके आओ, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में है, अगर वो रखे रहेंगे तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, इसलिए उसको बाहर निकालना है. सो वी आर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इज ब्रीदिंग. देन सेकेंड, मान लो हमने ऑक्सीजन ले लिया, अभी ऑक्सीजन थ्रू नॉस्ट्रल वी हैव टेकन टू द लंग्स, ट्रैकिया, देन टू लंग्स, एंड देन लंग्स टू एल्वियोलाई. एल्वियोलाई में लंग्स एंड एंडोथीलियम होगा जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के साथ जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ पे आएगा? ब्लड में. ब्लड पूरे बॉडी को, हर एक सेल्स को क्या प्रोवाइड कराएगा? ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन उसको कैरी करेगा एंड सबको पास आउट करेगा. सारे सेल्स को कौन देगा? क्या देंगे? ऑक्सीजन. तो ट्रांसपोर्ट करेंगे ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएंगे लंग्स तक, और लंग्स से ऑक्सीजन लेके जाएंगे तुम्हारे पूरे सेल्स तक. फिर वहाँ से सेल्स को अभी मिल गया है ऑक्सीजन, अब क्या होगा? अब ऑक्सीजन मिलने के बाद सेल्स क्या करेगा? उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वहाँ पे वो ऑक्सीजन दिया जाएगा, सो दैट कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको ब्रेक किया जाए. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज्म which is providing what? Energy. So the first is taking oxygen in. Then what we will do with that oxygen? ऑक्सीजन का क्या करेंगे? ऑक्सीजन लंग्स तक आएगा, लंग्स में एल्वियोलाई तक आएगा. फिर हम लोग देखते हैं कि देयर वी हैव डिफ्यूजन, लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कौन से गैसेस? ऑक्सीजन एंड CO2. कहाँ पे एक्सचेंज कहाँ पे होगा? बिटवीन एल्वियोलाई एंड एंडोथीलियम. एंडोथीलियम को बोल सकते हैं ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज नियर लंग्स. लंग्स के बाद बहुत, लंग्स इज हाईली रिच विद ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज विच इज डीऑक्सीजनेटेड. जब वहाँ पे हम लोग लेके आएंगे कि NCERT में है गिवन कि कैसे डिफ्यूजन होता है, तो देयर इज 3 मेम्ब्रेन फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजन इज कमिंग टू द एंडोथीलियम, एंड उसके बाद से वो ब्लड वेसल्स में द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी कन्वर्टेड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. सो एल्वियोलाई एंडोथीलियम तक आएगा. देन एंडोथीलियम मतलब ब्लड वेसल्स में अभी हमारे पास क्या आ गया है? ऑक्सीजन. नाउ हमें पता है, अगर हमने सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू अगेन टू द हार्ट, एंड देन फ्रॉम हार्ट इट इज पम्प्ड टू द ईच एंड एवरी part of your body. So each and every part of your body, the cell will accept that oxygen. So the second diffusion will be taking place. कहाँ पे? Exchange कहाँ पे होगा? Exchange of gases. कहाँ पे? Exchange होगा
ब्लड कैपिलरीज, एक ही है एंडोथीलियम या फिर ब्लड कैपिलरीज से लेके कहाँ पे, सेल के पास। क्या होगा यहाँ पे, सेल से हम लोग CO2 लेंगे और इनको देंगे हम लोग ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन सेल कंज्यूम करेगा ब्रेक करने के लिए। एंड उसके साथ लास्ट में रिएक्शन जब खत्म होता है, जब हम ऑक्सीजन यूज करते तो हम मेटाबोलाइट्स निकालते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो हम वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है वो बाहर निकालेंगे, बाहर किसको देंगे, इनको, तो ब्लड कैपिलरीज को। फिर ब्लड कैपिलरीज किसको देंगे, एल्वियोलाई को, पर एल्वियोलाई नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम बोल सकते हैं, एक जगह एक अंदर आता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेल्स के पास हो गया। अब क्या होता है, द लास्ट प्रोसेस इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज हैपनिंग इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, वी आर ब्रेकिंग द फूड इनटू द, this is cell, here we have glucose. Now this glucose is broken down into to get you ATP plus CO2 plus water. This is excretory product, मतलब this we don't require, H2O and CO2, H2O तो हम use भी कर लेंगे, CO2 we don't require. So what do we require, ATP 36 ATP मिलती है। तो ये किसके थ्रू होता है, ये ऑक्सीजन के थ्रू होता है। ये इनसाइड द सेल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन ही लास्ट प्रोसेस है जहाँ पे तुमको एनर्जी मिलेगी, उसके पहले एनर्जी नहीं मिलती है। और सेल ही एनर्जी, हम एज अ बॉडी यूज जो एक्ट करते हैं वो हम नहीं, हमारे सेल्स एक्ट करते हैं। हम बोलते हैं ना कि आवर बॉडी इज द सेल इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम एज अ लाइफ बिकॉज ऑफ सेल, तो वो है यहाँ पे लास्ट प्रोसेस। इन 4 स्टेप में हमने तो देखा कि ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाता है। यहाँ पे जब एल्वियोलाई से एंडोथीलियम में जाता है तो यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। मतलब कि एंडोथीलियम में, लंग्स से एंडोथीलियम में तो आ गया, मतलब ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन आ गया और हमने CO2 को दे दिया एल्वियोलाई को, बट अब वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करना है। और वो ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा, अपने ब्लड के थ्रू। तो ब्लड में कौन होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज नोन एज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, वो कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, 4 ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। एंड कितने, एक RBC में कितने ऑक्सीजन होते, कितने हीमोग्लोबिन होते हैं, अबाउट 280 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन आर इन 1 RBC। तो बहुत सारे हमारे पास RBC हैं, 120 दिन की उनकी लाइफ होती है, और उनका होल एंड सोल काम होता है कि जस्ट टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन थ्रू हीमोग्लोबिन। सो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। एंड देन फिर वो ट्रांसपोर्ट होगी कहाँ पे आएगा, सेल तक आएगा। तो दिस इज द प्रोसेस। ये चारों पांचों को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन। सो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेशन। ना हर एक के पीछे हमको बहुत सारी कहानी पढ़नी है कि कैसे ब्रीदिंग होती है, कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कौन से फैक्टर्स ब्रीदिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, व्हाट इज़ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। फिर हम देखेंगे कि कैसे एल्वियोलाई और एंडोथीलियम के यहाँ पे एक्सचेंज कैसे होता है, कौन से 3 लेयर्स होते हैं वो देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद से हम देखेंगे कि ब्लड कैपिलरीज एंड सेल्स के यहाँ कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा है, द चेम्बर कैसा है, थोरेसिक चेम्बर कैसा है, कैसे बना हुआ है, वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होता है, वॉल्यूम कैसे डिक्रीज होता है, उसका इफेक्ट प्रेशर पे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, प्रेशर कम होता है तो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, ब्रीदिंग में ही देख लेंगे। उसके बाद से फिर हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर के बारे में बता रहा। फिर dissociation of oxygen and hemoglobin curve देखना है, and then the loading and unloading of O2 and CO2 near tissue and the lungs, ये देख के फिर हम लोग को control और regulation of oxygen and regulation of respiration देखना है। तो this is the introduction. Now after this we will be learning the breathing. What is the after this we will be learning the respiratory pathway, like from nose or from nostril the oxygen is moving to the alveoli. What is the pathway, what is the passage
we have to discuss first that, and then the structure of lungs, and then the breathing mechanism. So this is all about the introduction. We will study the next thing in the next video. Thank you so much.